everyone, my name is Megha and welcome back to my channel English with Megha. In this video, we are going to talk about most confusing words in English, its and its. As you can see, both words have same pronunciation. So mixing up its and its is an extremely common mistake. So let's break them down. So the first basic difference between them is how they are written. So one it's we have apostrophe sign and the second it's we don't have apostrophe. So the first one written like that and the second one written like that. And the second and main difference between them is about their meanings. Both have different meanings. So let's see what is the meaning of its with apostrophe. When we use apostrophe in it means it is a contraction of it is or it has. So contraction का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटा करके लिखना, मतलब संकुचित करना, राइट? जैसे कि it is, अगर हम इन दोनों को छोटा करके लिखेंगे तो हम लिखते हैं इंग्लिश में its, it apostrophe s. तो it is, तो is का जो I होता है वो हट जाता है, तो इससे लिखने में और बोलने में आसानी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम जल्दी से लिख सकते हैं या बोल सकते हैं. द सेम थिंग इट हैज के साथ भी होता है. अगर हमें इन दोनों वर्ड को छोटा करके लिखना है तो सेम इट्स का यूज करते हैं. बस ये होता है कि जो हैज का एच ए है वो हट जाता है. ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इट्स को इट इज के लिए यूज करेंगे और कहाँ पर इट्स को इट हैज के लिए यूज करेंगे. मैं आगे सेंटेंस में आपको ये चीज क्लियर करूंगी. We have lots of words with apostrophe like I am, I, don't, doesn't. So इसी तरीके से it's का भी यूज होता है जिसमें apostrophe लगा होता है. अगर आप apostrophe को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, मैं इस पे भी एक अलग से लेसन बना दूंगी. Now let's see what is it's without apostrophe. So it's without apostrophe is possessive form of it. English generally used apostrophe to indicate possession. For example, Ram's bike, इसका मतलब है कि राम का बाइक. The bike which is belonging to Ram. Similarly, lion's roar, that means the roar of lion. That means शेर की दहाड़, right? But confusingly, English does not use apostrophe when it's showing possession for personal pronoun. For examples, yours, theirs, ours, its, etc. So I think this is very important point and we need to note down this so that we can able to differentiate between these words. Now let's see some sentences so that we can more clarify with these two words. तो पहले देखते हैं it's with apostrophe. तो पहला sentence है she misplaced her phone but she thinks it is in her car. Right? तो इस sentence में हमने apostrophe वाले it को use किया है. Second sentence is It's so nice to see you. It's been so long since we hang out. इस सेंटेंस में जो इट्स है, जो कि इट इज और इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन है, तो उन दोनों का ही यूज हुआ है. मैंने पहले ही आपको मेंशन किया था कि इट्स जो है वो इट इज और इट हैज दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन सेम होता है. तो इस सेंटेंस में पहला जो सेंटेंस है वो इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है और सेकंड में जो है वो इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन है. नाउ मूव फर्दर एंड लेट्स सी द एग्जांपल सेंटेंस फॉर इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी. सो द फर्स्ट वन इज द होटल raised its rates. So here its conveys that the rate belongs to the hotel. Second one, the car needed its brakes repaired. Another sentence, I didn't like film overall even though its visuals are amazing. तो आपने देखा कि इन सेंटेंस में पोजीशन की बात हो रही है, जहाँ पे अगर हम ब्रेक की बात करते हैं तो ये कार को बिलोंग करता है. उसी तरीके से अगर हम विजुअल्स की बात करें तो ये फिल्म को बिलोंग करता है. तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको इट्स का यूज करना है जिसमें अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा होता है. सो बिफोर सेइंग बाय, आई वांट टू डू सम टेस्ट. सो हियर आई एम मेंशनिंग सम इनकरेक्ट सेंटेंसेस. व्हाट यू नीड टू डू, you need to do correct all these sentence and write down in comment section. Thank you for watching. If you like these videos, please do like, subscribe and share, and don't forget to press the bell icon so that you can get all the notifications of my videos. Thank you.